हेलो, मेरा नाम है आशीष रमोला और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। गुजरात में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। पहली जो वोटिंग है वो 1 दिसंबर को होनी है। पहले फेज़ का मतदान जो है वो 1 दिसंबर को होना है और दूसरे फेज़ का होना है 5 दिसंबर को और 8 तारीख को वोट डाले जाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे पार्टियाँ टिकट बाँटती जा रही हैं तो काफ़ी एक राइवल्स लोग हैं जो चाहते हैं कि टिकट उनको दिया जाए, उनके सगे-संबंधियों को दिया जाए या उनका टिकट क्यों काटा गया है। ऐसी ही एक जो बात हुई वो कांग्रेस में कांग्रेस के कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने अहमदाबाद में एक अपना ऑफ़िस वैंडलाइज़ कर दिया है, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए थे वहाँ के उनको टिकट दिया गया जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि आखिर इनको टिकट क्यों दिया गया है। ऐसे ही भाजपा में हो रहा है कि कई लोग जो है खुल के सामने आ रहे हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि भाजपा ने सीके राहुल जी को टिकट दिया है, जो कि गोधरा से एक एमएलए हैं और जिनका काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुआ। उन्होंने बिल्किस बानो को लेके बयान दिया कि जो उनके गुनाहगार थे, वो एक संस्कारी थे और ब्राह्मण थे। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि वो जो बयान था, उन्होंने मोजो स्टूडियो को दिया था, मुझसे बात करते हुए दिया था। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, आपका रोल क्या रहेगा और कैसे गुजरात इलेक्शंस को देखा जाए आगे आने वाले टाइम में। मेरे साथ हैं मीता चक्रवर्ती कांग्रेस से, दीपल त्रिवेदी वाइब्स ऑफ इंडिया गुजरात की नब्ज़ पकड़ती हैं और उनसे हम ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से हैं हिरेन कोटक, इनको काफ़ी सारे जवाब देने हैं क्योंकि अभी ये सत्तारूढ़ पार्टी हैं और आगे किस तरीके से देख रहे हैं और कितना चैलेंज ये आप और कांग्रेस को देते हैं या फिर आप या कांग्रेस इनको देती है, ये देखने वाली बात होगी। दीपल जी, पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। चुनाव नज़दीक है, आज 14 तारीख हो चुकी है, तो आप मुझे बताइए कि ग्राउंड पे भी सिचुएशन क्या है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कांग्रेस एंड आप एंड व्हाट बीजेपी इज़ डूइंग? As of now, I think the BJP is very comfortably placed in Gujarat. Though this is for the first time that we are seeing a certain murmur of protest within the BJP, and especially the candidates expressing it so visibly. Because in the past, at least after 2001, Okay, let me sorry to interrupt. Let me give you a fact that 40 sitting MLAs, have not given tickets out of 166, मतलब जो अभी तक लिस्ट जारी हुई है। Yes, please carry on, ma'am. yes. So, but this has been the BJP style. In the past also, many more MLAs than this have been dropped by the BJP. In fact, the entire cabinet has been dropped, the chief minister has been replaced, and the BJP being a very disciplined and a cadre based party, it takes it all in their stride. But this time, perhaps for the first time in last 2 decades, we are seeing protests by candidates who feel that they deserved a ticket, like some of them having a very tarnished reputation, some of them not fitting in the caste combination, which plays a crucial part in all elections. If we talk of Congress, there has been vandalism, there has been protests. Today in Ahmedabad, for example, there was a protest alleging that a certain Congress leader took 5 crores or 50 crores from a sitting MLA to repeat him. Now, like the Congress has not been in power in Gujarat for so long. I don't think there would be anyone who would be even ready to pay so much money, Gujarat being such an entrepreneurial society. But then vandalism or such display or protests is very common every election time when it comes to Congress, but it's for the first time when it comes to the BJP. If we talk of Aam Aadmi Party, it is for the first time that Aam Aadmi Party is playing such an aggressive electoral politics in Gujarat. So, Aam Aadmi Party, there has not been much of visible aggression, and that is expected because this is for the first time. ओके मैम। मिस्टर कोटिक, मैं आपके पास आता हूँ। पहले तो मुझे एक बहुत बेसिक सवाल का जवाब चाहिए कि आपके जो सिटिंग एमएलए हैं गोधरा से, सीके राहुल जी, जिन्होंने कहा कि जो बिल्किस बानो केस में 11 दोषी जो रिहा हुए, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे कि ऐसा क्यों हुआ?
और क्योंकि उनको काफ़ी उनका क्रिटिसिज्म हुआ था ऑन दैट पार्ट, आपने देखा होगा कि एंड उन्होंने मुझसे ही कहा था कि वो काफ़ी संस्कारी थे, ब्राह्मण थे। फिर भी मैं एक बार अपने ऑडियंस को रिमाइंड कराने के लिए वो बाइट प्ले कर देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशनली भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। सर, बाइट आपने सुनी और आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा और देखा होगा, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जिसमें भाजपा को एक क्रिटिसिज्म झेलना पड़े? देखिए, ये व्यक्तिगत उनकी मान्यता हो सकती है, लेकिन जैसे कि अभी दीपल जी बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी भी है और एक फ्लेक्सिबल पार्टी भी है। यहाँ पर बहुत जैसे कैंडिडेट को चेंज भी किया जाता है। जो भी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के चुनावी माहौल में देखने को मिलती है, वो बाकी सब पार्टियों से एक इस तरह से अलग है कि जो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, वो कैंडिडेट हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जिनका अपना एक प्रोफाइल रहेगा पब्लिक सर्विस का। इवन उनके ऐसे कुछ काम भी रहेंगे जो पार्टी के लिए उन्होंने किए हो, तो सारी चीज़ों को जोड़कर दिखा जाता है। व्यक्तिगत मान्यता के रूप से अगर आप देखा जाए तो न सिर्फ CK राहुल जी बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी व्यक्तिगत मान्यता को लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन जब हम ये खेस और ये जो आप देख रहे हैं, हम टोपी धारण करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तो बात मैं टोपी, रखूंगा। इसमें टोपी की इंसल्ट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी राय जब रखती है तो भारतीय जनता पार्टी की राय होती है। और आपने जब इंटरव्यू लिया है, आपने देख रहे हैं कि CK राहुल जी के सर पर न किसी प्रकार की टोपी या कुछ भी है। सर भारतीय नहीं, जनता पार्टी का मत है, वो भारतीय जनता का मत है, नहीं, ये कोई मत जस्टिफिकेशन नहीं है सर भारतीय इस बात जनता का। पार्टी का। नो नो, नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उनके सर पे टोपी नहीं है तो उनको कुछ भी बोलने का हक है। वो आपके सिटिंग MLA हैं गोधरा से। नहीं, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल सही बात है प्रोसीजर आपकी। सर। मैं यही इसी बात को मैं आप प्राधान्य दे रहा हूँ कि वो जब कोई भी बात कर रहे हैं तो वो उनकी व्यक्तिगत मान्यता या उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सर सकते हैं। व्यक्तिगत जब मान्यता यही नहीं हो बात सकती, अगर वो उस कमेटी के मेंबर थे, ये व्यक्तिगत नहीं देखिए, है सर। जैसे कोई भी संस्था हो, उनके स्पोक्स पर्सन होंगे, प्रवक्ता होंगे, वही बात जो बताएंगे वही अधिकृत मानी जानी चाहिए। वो उनकी मान्यता कहीं हो सकती है या वो किसी और एंगल से भी बता रहे हो, तो वो इतना, अब देखिए, आप तो इंटरव्यू यहाँ चुनाव के टाइम पर किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो आपको स्पोक्स पर्सन से बात करनी होती है। तो स्पोक्स पर्सन जब बात करता है तो वो पार्टी की मान्यता होती है। तो मैं पार्टी के मान्यता के ऊपर तो आपकी कायम पार्टी इस रहना चीज को, चाहूंगा। इस पार्टी क्रिटिसाइज करती है इस बयान को? देखिए, ये क्रिटिसाइज करना ये हमारे स्टेट स्पोक पर्सन का काम है, और इसके बारे में आप कोई भी बात स्पोक होगी तो पर्सन सर, बिल्कुल आपके सामने आएगी, वो अलग आप भी माध्यम से स्पोक आपके पर्सन सामने है आएगी। सर, आप भी बिल्कुल, स्पोक मैं पर्सन मैं है। मैं मीडिया टीम मेंबर तो हूँ और मैं पैनलिस्ट हूँ। स्पोक पर्सन हमारे, आप जानते हैं, यमल जी है, फिर हमारे कन्वीनर है यज्ञेश दवे जी, वो इन बातों पे वो बता सकते हैं। हम इस बारे में कोई बात करने के लिए, क्योंकि अगर पार्टी का कोई डिसीजन है, पार्टी की कोई स्कीम है, या फिर पार्टी की तरफ से दिया हुआ कोई बयान है जो अधिकृत मंच से बात की होगी हो, उसके ऊपर मैं जरूर आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ। हालांकि जहाँ मैं ये आपकी बात इंडिविजुअल से बिल्कुल जब सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी जो होती है, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा होता है, जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है और जवाबदेही भी सरकार की बनती है कि कैसे उन 11 कैदियों को रिहा किया गया। हम इस पे बाद में आएंगे। मीता, आई जस्ट वांटेड टू कम टू यू। There is a in fight in the Congress. The office got vandalized today in Ahmedabad. Why it is happening? And first of all, and the second question is that Rahul Gandhi has decided to join the Gujarat campaign suddenly. So, this U-turn, what we can make a sense. Okay, good evening to all your viewers. And first of all, before I answer your query, please give me 10 seconds to comment about what my friend from BJP said. It takes basic common sense. It does not take a party's well calibrated standpoint to actually dismiss what the MLA from Godhra said. The MLA from Godhra said that people who were convicted, not accused, of gang rape, of murder of a child in front of the child's mother,
and have been released, they are sanskari because they belong to a certain caste of a certain religion. To distance themselves from such a statement, to say that this person is wrong in very clear language, it just takes basic common sense and basic sense of conscience. It does not take a party's well-calibrated political standpoint. You should not have to wait for the state spokesperson to come and comment about it. It's basic common sense. And by giving that person another ticket, another chance to be MLA, the BJP party is basically, politics is a lot about messaging. The BJP party is basically saying it's all right. It's all right to indulge in violent crime against women, against children, because all you have to do is spend a few years behind the bar, and then you're back, you're felicitated, you're integrated back into the society. And you know what? Our elected legislative people will go and give you a character certificate of being sanskari because you belong to a certain higher caste of a certain religion. It's a matter of great shame. As a woman, as an Indian woman, I think it's a moment of great shame. Number one. Number two, yes, you talked about infighting. I'm going to address that. It's very unfortunate when any political organization we have seen over the decades, at the time of election ticket distribution, there had been disagreements, be it in the BJP, be it in Congress. This time we are seeing more disagreements happening in BJP. If you look at the example of Himachal Pradesh election that happened very recently, we had 21 rebel candidates. We saw how the PM himself spoke to one of the rebel candidates, and yet the rebel candidate did not step down. He went on to contest. उसकी एक And we कहावत only है, had there an is a instance. phrase कि उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसी है या उसकी कैसी है. So that's what my first submission Because was. your It's very party is struggling. unfortunate. My first submission is that it's extremely unfortunate when you have disagreements which you cannot, if you have to actually go out in front of the media and public with your internal disagreements, it is obviously unfortunate, but it has been happening at the time of ticket distribution over the decades, over the centuries. Should it happen? Definitely not. I hope it is handled better. But this time we are seeing a lot of disagreements within the BJP party as well. Even in Gujarat, we are seeing a lot of rebel and a lot of disagreements coming out in the open. And as I said, in Himachal Pradesh, I think there were hardly 4 or 5 places where there were semi-rebel candidates from Congress contesting. But we saw about 21 places where BJP's rebel candidate had been contesting, and who knows, some of them may actually win the elections as well, or definitely cut away or take away a significant amount of BJP's vote. So yes, it's unfortunate, but it's a political reality. We are trying to manage it. We are trying to address concerns of all stakeholders to the best of our capabilities. But when it does come out in the public domain in front of the media, it is definitely unfortunate. But at the end of the day, we are here to talk about a better governance, better political alternative to the people of Gujarat. We have spoken to about 65 lakh people before presenting the manifesto, where we have spoken about restoration of old pension scheme. We have spoken about 10 lakh new jobs, about 300 units of free electricity, LPG cylinder gas being subsidized to about rupees 500 per cylinder, allowance to be given to unemployed people, and several other promises. And it has been done in a consultative manner. We have interacted with the people of Gujarat, and we have tried to give them a political alternative. Your last query was about Rahul Gandhi ji coming for campaign. Till now, we have been asked that why is Rahul Gandhi ji in Bharat Jodo Yatra and not coming for a campaign? Now that he has decided to come and campaign. No. It was not in his itinerary. He will go to Gujarat and then campaigning there. I think right from the beginning, and I have done a show on this in India Today, where right at the beginning he did say that there are a few break days in the yatra, right? A few rest days. And in those rest days, he would see whether he would be, yes, because in Himachal Pradesh, right from the beginning, Priyanka Gandhi Vadra ji was managing the entire campaign. So probably he felt that with Mallikarjun Kharge, Sachin Pilot, Priyanka Gandhi ji, Rajiv Shukla ji, all the central leaders campaigning in the state of Himachal Pradesh, probably he thought that Congress was in a better position. And that could have been a reason. I really do Congress not in better position in Gujarat.
But no, I did not say that. But what I'm saying that is his personal prerogative. Priyanka Gandhi ji was managing the campaign in Himachal Pradesh. Priyanka Gandhi ji has, till this day, till this point in time, has not come in Gujarat. So he has now decided to go and campaign in Gujarat. Okay. And I think if he can do both, if he can be part of Bharat Jodo Yatra, which is a far bigger political objective than just winning one assembly election. Of course, electoral victories are very, very important for any political organization. Okay, fine. But if he has now decided to go to Gujarat for election campaign, I think we should welcome that decision. Okay, fine. Kotak ji, just 30 seconds brief introduction आपका. जी. बोलिए. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले से ये बात होती रही है कि गुजरात में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी का कोई स्थान नहीं है. वो आज के दिनों में साबित भी हो रहा है. लेकिन ये बहुत बड़ी बात के पीछे ये भी कहना है कि कांग्रेस के जो आला लीडर है, जो सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, वो क्यों नहीं आ रहे, वो प्रश्न लोगों में बिल्कुल फैला हुआ था. अब जब मैनिफेस्टो की बात मेरी बहन ने छेड़ी है, तो मुझे ये खास चीज बतानी है कि मैनिफेस्टो में जो बताया गया है कि राजस्थान में हमने ऑलरेडी ओल्ड पेंशन योजना है वो लागू कर दी है. लेकिन असल की बात ये है कि हमने जब पगार पंच के अध्यक्ष राजस्थान के बिजलानी मैडम से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये योजना जो है 2029 में लागू होने वाली है, 2029 में, और उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है. ये बहुत बड़ी चीटिंग जो हुई है राजस्थान के साथ, वही चीटिंग यहाँ दोहराने की बात है. और 500 रुपए का गैस सिलेंडर, उसमें भी कोई बजट में प्रावधान नहीं है, या ये कैसे करेंगे ये भी कोई प्रावधान नहीं है. क्योंकि जब भी आप कोई योजना लाते हैं या फिर आप कटौती देते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि कहाँ से वो पैसे लाएंगे. वो कोई प्रकार की कोई योजना उन्होंने कभी क्लियर नहीं की है. तो इस तरह से एक और पार्टी है जो चीटिंग के तरफ आगे बढ़ रही है. ठीक है. ओके, दीपल, आपने देखा कि दोनों जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने अपने अपने तर्क रखे. सीके राहुल जी के मामले में तो बीजेपी बिल्कुल हाथ खड़े कर दी. मुझे समझ नहीं आया क्यों उन्होंने उनको टिकट भी दिया है. और ये मुझे ये क्या आपको लगता है ये मुद्दा एक इलेक्शन कैंपेन में बनेगा? और मीता, आई जस्ट कम टू आफ्टर दीपल, जस्ट गिव मी डोंट वरी, आई विल कम टू. ओके, तो और मीता ने भी बताया कि क्यों राहुल गांधी को आने की जरूरत पड़ी, और मतलब जरूरत क्या पड़ी. उन्होंने कहा कि वो पहले आप बोलते थे कि आते नहीं, अब आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो रही. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स फॉर अस? Yes, first of all, I think Mita very aptly pointed out, that initially there was a talk and criticism of why Rahul is not visible in Gujarat. No, I think क्या पता क्रिटिसिज्म के बाद राहुल गांधी ने तय किया हो. No. I don't agree to that, Ashish, because Rahul was here in August for a sammelan, which was a very successful sammelan in Ahmedabad at Sabarmati riverfront, and at that point of time it was informed that he would be taking break from Bharat Jodo Yatra, and there would be about 4 times that he would be visiting Gujarat for campaigning. So number one, that's not the right thing to say, that it is all of a sudden that Rahul Gandhi has changed his plans and has decided to visit Gujarat on 22nd of this month. Point number 2, if we talk about, is the protests and rebellion by candidates, like both BJP and Congress. Maybe it is their way of internal democracy or whatever they want to politically put it as. Even that can be condoned. But what cannot be condoned is a ticket to someone who endorses rapists, whatever community they belong to, whatever caste, whatever creed they belong to. Coming from Gujarat, coming from certain community, if it is to be said from a Brahmin community, I'm ashamed as a woman, ashamed as a Brahmin. And I have spoken to a lot of BJP politicians, sane BJP politicians, who have condemned it, obviously, because I don't even think हिरेन भाई, इसमें कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है कि टोपी पहनने की बात किसी ने लेकिन मुझे लगता है किसी ने ऑफिशियली कंडेम नहीं किया है.
which is the most, it's not even a question of common sense. I think it is a question of character. It is a question of integrity. It is a question of basic self-esteem. It is a question of how we treat human beings. It's not a question of politics. It's a question of humanism. It's a question of human rights. So हिरेन भाई, आप अगर ये बोले कि जब राहुल जी ने बोला तब टोपी नहीं पहनी थी और खेस नहीं पहना था, આપણે જેમ ગુજરાતીમાં કહીએ ટોપી કાઢીને બીજાને ટોપી તો ના પહેરાવાય ને આવી વાતમાં. કોઈ પણ પ્રકારનો આવો બનાવ બન્યો છે તો એની ચોક્કસપણે નિંદા થવી જોઈએ ને હું પણ કરું છું ને એવો બનાવ ન બને એના માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એ બાબતમાં હું સહેમત છું. અહીંયા એ બાબત નહીં, પણ રાહુલજીએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, દીપલજી જસ્ટ અ મોમેન્ટ, give me a moment, હું એટલું કહું છું ખાલી કે રાહુલજીએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એ એમનું વ્યક્તિગત સ્ટેટમેન્ટ છે અને सर એને थोड़ा सा अगर आप पार्टीने हिंदी में समझाएं तो सबको समझ आएगा जो आप अपना ये कॉन्सेप्ट ये ये हिरेन भाई सॉरी बोल रहे हैं कि राहुल ये जी जो का ये जो personal- स्टेटमेंट जो भी है वो राहुल जी का अपना व्यक्तिगत है. और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, कहीं भी होती है, ये दुनिया में कहीं भी होती है, भारत में, गुजरात में, कहीं भी, तो बिल्कुल इसे कंडेम किया जाता है और कंडेम किया जाना चाहिए. ये व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं और हमारी पार्टी भी इस बात पे एग्री है. अगर आपकी लेकिन पार्टी ने माना होता तो राहुल जी टिकट नहीं अगर दिया होता. थैंक जी। यू हिरेन भाई, आपने बोला कि इसको कंडेम करना चाहिए. मैं भी गुजरात में रहती हूँ, आप भी गुजरात में रहते हैं. आप मुझे लिस्ट बताएंगे कि किसने कंडेम किया, किसने इस बात की आलोचना की कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप भी एक ऐसे रीजन, मुझे लगता है आप राजकोट से होंगे, आप कोटक है इसलिए राजकोट या जामनगर से होंगे. मैं भी सौराष्ट्र की हूँ. हमारे जी। में तो स्त्री को शक्ति माना जाता है. हम स्त्री को बिल्कुल शक्ति की रूप में आराधना करते हैं. और जब बिल्कुल ऐसी कास्टली इंसिडेंट होता है, आप भी बोलते हैं इसको कंडेम करना चाहिए, पर आप मुझे लिस्ट, आप मुझे नाम बताइए किसने कंडेम किया इसको गुजरात में. और आशीष, आई विल एड ऑन टू दिस, वेदर CK Raulji will win. Unfortunately, I have to say yes, he is all set for a victory as of now, because this is Gujarat, right? And CK Raulji is very important for BJP, because it is CK Raulji who has started getting tribal votes for BJP in that particular region. Yes, If yes. we look at it, it was in 2002. After 2002, BJP made a mark. CK Raulji, if he is elected this time, it would be his 7th term as a MLA, right? Now, CK Raulji, 28% votes of minorities within Godhra, he may not get because of this issue, but that would consolidate the remaining majoritarian votes, because this is Gujarat. Because this is Gujarat, what matters is that I'm sanskari, because I belong to a certain community. It would not be my act, but it would be my community, it would be my caste that matters. It is very unfortunate, and I don't know if, good sense is going to prevail over people of Godhra. But as of now, I see CK Raulji, because CK Raulji, if we see personally, CK Raulji is a nice man. You also met him, interacted with him. I was really surprised. First of all, as a journalist, it is very commendable that you made him speak out the statement that exposed, this barbaric attitude towards women in general and towards women of a certain community. Basically, I was stunned. I was, because I was not expecting this kind of statement from him, and he was very comfortable. And I'm sure the BJP would not want to repeat such a candidate, but it would be electoral compulsion, because without CK Raulji, it would be difficult to win Godhra, because he enjoys a good reputation in Godhra as a politician. And Godhra, as we all know, there is history to prove of how polarized Godhra is. Right. Fine. Okay, Mita, you wanted to come in.
And I think, yeah, with your permission, I would want to ask something of my friend in BJP. Forget about politics for some time. Okay, I know we are talking about elections, electoral arithmetic, who is going to get what vote share, whether it's bipolar or whether there are three parties to be considered. Just as a Gujarati and as a fellow Indian, right? Don't you think that a person in a position of responsibility and power, we are not talking about anyone, we are talking about an elected MLA. We are talking about a person who was part of that board that actually decided on the remission of this 11 convicts. Don't you think that person needed to speak with more sense of responsibility? Don't you think that this is a reflection of deep set misogyny in our society, deep set communal hatred in our society, and it needs to be condemned and corrected? By giving this person a ticket, where many people are claiming that BJP is very strong in Gujarat, Gujarat happens to be a place of strength for BJP. So why would you, even for electoral arithmetic, is winnability the only factor? Just as a fellow human being, forget about politics, forget about political color, just as a fellow human being, just as a brother, can you not stand up and say that this behavior is unacceptable, no matter from which party it comes from? You Ma'am, don't need anybody's endorsement to do that, let sir. me interject here for 10 seconds. If you're saying about this politics, so what Rajiv Gandhi did in Shahbano case was also like things which shouldn't happen, right? So the problem is we often indulge in whataboutery. We are talking about Raulji getting a ticket now in Gujarat election, Mhm. and whenever there has been any statement of any color, really coming from any political organization, our first commitment is towards our community, towards our country, towards human race. We need to stand up as human beings and talk about human rights first. First, we have to be better human beings and then try and be better politicians. And I think it's very, very shameful that if something so basic, something that needs to be condemned at all levels, if BJP is struggling to condemn it, forget about condemning it, BJP is actually going on and endorsing it by giving that person another chance to become a MLA. I think it's extremely unfortunate. It needs to be highlighted. I'm glad you picked this topic up for today's discussion. And I'm sure this will be noted by a lot of women voters in Godhra and also in Gujarat, and the nation is watching. Fine. हिरेन जी, आपको आप मुझे लग रहा है जब हॉट सीट पे हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई है, सो यू हैव टू बी आंसर्ड, आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो मुझे बहुत सारी चीजें भी याद आती है। साथ साथ कांग्रेस एक तरफ से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और कांग्रेस की तरफ से ही आपने देखा होगा, आप थोड़े हम भूतकाल में जाएंगे तो हमें याद होगा कि जब सिखों के दंगे हुए थे वहां ह्यूमन राइट्स कहाँ गया था। यही गुजरात में भरत सिंह सोलंकी की बात आती है, तब भी एक केस हमें याद आता है जो बहुत दूर का नहीं है। तब भी आज भी वही भरत सिंह सोलंकी जो है वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और इस इलेक्शन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये यहाँ क्या होता होगा ये हम देख सकते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की बुराई की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये केस या इसी तरह का एक कोई भी केस हुआ है तो वहां अगर महिलाओं के प्रति अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो वाकई में वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ये सजा होनी चाहिए। सर, और एक इस मामले आखिरी में बार आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप इस स्टेटमेंट को ऑफिशियली कंडेम करते हैं? मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं है, इसलिए अगर पूरी वीडियो आपके लिए मैं देखता तो मैं जरूर बता पाता। मैं दोबारा चलाता हूँ सर, आपके लिए। जो आपने चलाया वो मैंने देखा, बिल्कुल जो चलाया आपने मैंने देखा, लेकिन उनकी बात और उनका व्यू क्यों ऐसा बोले। सीके राहुल जी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो हम जानते हैं और दीपल जी भी बता रही थी और इवन कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी बता रही है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तब होते तो इस तब तरह वो का जब बयान बता नहीं रहे देते तो जब वो बयान दे रहे तो उनके मन में क्या चल रहा है। वो बिल्कुल सोच समझ कर बात करने वाले इंसान है। इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जो वाकई में महिलाओं के खिलाफ जाती हो।
तब उनका भी एक स्टेटमेंट, या अगर वो भी अगर यहाँ हमारे साथ शामिल ही होते तो बिल्कुल वो खुद भी बता पाते कि उनके स्टेटमेंट के पीछे उनका क्या कहना था। इसलिए अभी इतनी जल्दबाजी करना कि उनके स्टेटमेंट के लिए कोई ऐसी कमेंट करना जिससे कि उनके मन में कोई ऐसी बात ना हो और उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता हो, इसलिए हमें इतना तो कम से कम वेट ही करना चाहिए कि सीके राहुल जी का अपने स्टेटमेंट के ऊपर क्या स्टेटमेंट है। हालांकि उन्होंने पब्लिक में आके कोई स्टेटमेंट दी नहीं और एक ट्वीट किया था छोटा था कि मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। एनीवे, दीपल जी, लास्ट वर्ड टू यू, प्लीज कंक्लूड। एक बात मैं हिरेन भाई से सहमत हूँ और मीता जी की बात से भी सहमत हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया। जैसे हिरेन भाई ने बताया, कांग्रेस में भी काफी ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसी भी फरियाद हुई है, इससे भी ज्यादा खराब फरियाद हुई है, और in the past they have also given tickets, right? There have been people with over 20 criminal cases whom Congress has sheltered. There have been people with character assassination, and हिरेन भाई ने जैसे बताया recent past में ही केसेस हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन केसेस हुए हैं, टिकट्स आई है. Why is it we can't be selective in this, that we try to pounce upon BJP and we just let some other party get scot-free? Even if we talk of Aam Aadmi Party, there has been complaint against Aam Aadmi Party MLA Gulab Singh Yadav, similar complaint of molestation registered nahi, but voiced out by a woman in Surat. They started a casting couch era. Sorry, they even started a casting couch area in politics. Exactly. So, I think we can't be this. What Rahul ji has said, I cannot just ignore it or condone it in any ways. It is barbaric, it is inhuman. But at the same time, I think we cannot be selective. If it's human rights, if it is respect for women, it should be for all parties. It cannot be that we compartmentalize Congress into this category, BJP here and up here. ओके, तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का अंत करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो वोटर होता है वो सबकी नब्ज जानता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वेदर कांग्रेस, आप और बीजेपी। तो अपना वोट आप सोच समझ कर दीजिएगा, किसने क्या कहा है याद रखिएगा, किसने क्या वादा किया है ये भी याद रखिएगा, और एक बेहतर कल के लिए, अपने बेहतर कल के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चुनिएगा, एक अच्छी सरकार चुनिएगा। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड दैट इज डेमोक्रेसी, एंड दैट इज इलेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Watch Her Story and support independent, robust journalism.